Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed two types of scatter diagram. First one is perfect negative correlation and second one is partial positive correlation. So I hope you all are understood. Okay, so today's lecture we discuss last two types of scatter diagram method, partial negative correlation and lack of linear correlation. Okay, so now we can first type show partial negative correlation. Okay, so if all the points of scatter diagram are not on one line but lie around some line which is going in downward direction from left to right, then it's indicate that there is a partial positive correlation between two variables x and y. दैट मीन्स जो भी हमने ग्राफ प्रिपेयर किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वेरिएबल एंड वाई वेरिएबल और वो ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है लेफ्ट टू राइट बट ऑल द पॉइंट्स आर नॉट ऑन वन लाइन, मतलब जितने भी पॉइंट्स है स्टूडेंट्स हमने प्लॉटेड किए ग्राफ में वो सब वन लाइन में नहीं है बट कोई एक लाइन है उसके अराउंड में सब पॉइंट्स हमारा प्लॉटेड हुआ है. दैट्स कॉल्ड अवर पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन. सो हियर आप लोग देख सकते हो कि ये जो ग्राफ है, सो इन दिस ग्राफ ऑल पॉइंट्स आर प्लॉटेड बट ऑल पॉइंट्स आर नॉट इन वन लाइन बट अराउंड सम लाइन. दैट मीन्स कोई लाइन है यहाँ पे ऐसे उसके अराउंड में ऑल पॉइंट्स प्लॉट किए और डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड लेफ्ट टू राइट. दैट मीन्स इट्स इंडिकेट partial negative correlation. Okay students, so I hope you all are understood and please note down this definition in your notebook and please draw this graph in your graph book. Okay students, so students let me understood this type partial negative correlation by this example. Okay, so now we have two variables x and y and also we have values of both variables. Okay, so now we prepare the graph. This one is y axis and this one is our x axis. Okay, so now we take a value on x axis and on y axis. So what is the minimum value of x variable? 3 and maximum is 7. That means here we note down points 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Okay, and on y axis what is the minimum value? 10 and maximum is 45. That means here we take points is 5 10 15 20 25 30 35 40 45 and 50. Okay, so now we started the plots the points on this graph. So first one is on x axis we take points 3 and on y axis we take a point 45. That means here 3 and here 45. So this point is plotted here. Okay, then 4 and 35. That means on x axis we take value 4 and on y axis we take value 35. That means this point is plotted here. So next 5 and 30. So on x axis 5 and here on y axis 30. That means this point is plotted here. Then next 6 and 15. So on x axis we take value 6 and on y axis we take value 15. So this point is plotted here. Then last one is 7 and 10. So on x axis we take value 7 and on y axis we take value 10. That means this point is plotted here. So after plotting all points we easily see this graph is partial negative correlation because all the points direction is downward and left to right and all the points of this graph
is not in वन लाइन बट सम अराउंड वन लाइन, मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन के सिमिलर स्ट्रेट लाइन में नहीं है, बट कोई एक लाइन है उसके सिमिलर अराउंड में ऑल पॉइंट्स हियर प्लॉटेड हुए. सो हियर वी कैन इजीली से दैट दिस ग्राफ इज partial negative correlation. Okay students, so please note down this graph in your graph paper. So I hope you all are understood. So please note down. Last type of scatter diagram method is lack of linear correlation. Okay, so what is the lack of linear correlation, students? So if all the points of the scatter diagram lie randomly without forming any specific pattern, then it indicates lack of linear correlation. That means x और y वेरिएबल के जितनी भी वैल्यूज है स्टूडेंट्स वो हम लोग प्लॉटेड करते हैं ऑन दिस ग्राफ, एंड जो लास्ट में हमारा जो पैटर्न होता है उसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता है. जैसे हमने पार्शियल पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव वो सब में देखा, तो उसमें क्या था स्टूडेंट्स, परफेक्ट एक पैटर्न था कि एक लाइन है लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड अदरवाइज अपवर्ड में वो कन्वर्ट होती है. क्लियर? बट इन दिस टाइप कोई भी फॉर्मिंग नहीं होता है, कोई भी शेप, कोई भी पैटर्न फॉर्मेट नहीं होती. ओके, सो कैसा होगा स्टूडेंट्स? तो ये जो ग्राफ है लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन इज रैंडमली वी टेक पॉइंट्स, मीन्स इसमें कोई भी स्पेसिफिक पैटर्न फॉर्मिंग नहीं होती है. सो इट्स कॉल्ड अवर लैक ऑफ लीनियर कोरिलेशन. ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट डाउन दिस definition in your notebook and please draw this graph in your graph book. Okay, so I hope you all are understood, and here your first method, scattered diagram method, is over, and I hope you all are understood. If you have any doubts, so please comment on this video, and in next lecture we will discuss your second method of correlation, Carl Pearson product momentum method. Okay students, so I hope you all are understood. Thank you.